नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद करती हूँ आप सबका हमारे शो पे जिसका नाम है भूमि के सवाल। आज हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ नीलेश हैं एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज़ बिकम अ वेरी हॉट केक। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री जयशंकर की किताब की द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। सो नीलेश, वेलकम टू द शो, वेलकम टू भूमि के सवाल on Jai none Hind to other all our than viewers. Assalamu alaikum to all our viewers from Pakistan. And thank you, Bhumi, for inviting me. Thank you so much. And thank you for anytime. to the support that you're getting from the audience. Yes, please जी, continue. थैंक यू सो मच ऑडियंस, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सम्मान देने के लिए। हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से है। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी जॉइन किया है, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और युवा वर्चस्व को युवा बढ़ाइए। इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूँ, मैं एक बहुत ही छोटा-सा मुद्दा उठाना चाहूँगी। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि चैनल का नाम युवा वर्चस्व क्यों है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट यू एंड आई एंड द एवरेज एज ऑफ Indian people is 35. We are the youngest economy in the whole world. We are the youth of tomorrow. We are the leaders of tomorrow. Thus, Yuva Varchasva is trying to be the voice of today's youth, of Asian youth. इसलिए मैं नाचीज भूमि और हमारे साथ बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलेक्चुअल नीलेश आपके सामने भारत की एक छोटी सी आवाज लेकर के आते हैं। रोज आते हैं, रोज आते रहेंगे। प्लीज प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब बिना किसी रुकावट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी नीलेश, नीलेश आपसे शो शुरू करने से पहले आपने मुझे एक बहुत ही उम्दा पॉइंट बताया था जिसमें आपने बोला था कि जयशंकर साहब ने अपनी किताब में लिखा है दैट इंडिया is going to be the world security provider. I will reiterate, world security provider. So what do you think this means for a global world and where are we heading towards? Over to you, Nilesh. Bhumi, let me just correct you a bit. It's not India will be the world security provider. We'll be the net security provider of the Indian subcontinent. Now, generally, when we talk of Indian subcontinent, we talk about Pakistan, we talk about Afghanistan, we talk about Bhutan, Nepal, Pakistan, we talk about Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, these states. Now, let's see historically, if only it's been India and Pakistan that has been at war. Let's talk about India is a India is protecting Bhutan. The net security provider for Bhutan is India. How have you ever heard, or can you comprehend in your wildest dream, or do you or will we ever accept if Indian army decides that okay, fine, we want to invade Bhutan? No, we'll be the first people to go out and stand. Hello, we are the net security provider. How can we do that? हम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया एंड दे वर बैक इन देयर बराक्स. आपका काम है जंग लड़ना और वापस अपने बराक में वापस आ जाना. सो if tomorrow if India, I mean, I'm just correlating, I'm just saying, it's could be a correlation, or it could be a big message to the world that in the new Indian assembly, you have the map of Indian Akhand Bharat. And then a book comes from the person who is going to be by 2030. He'll be the world's most important person, not the USA, not the president of USA, but the Indian foreign minister will be the world's most uh, influential person. So it is coming from his book that India will be a net security provider. Now let's see about the Sherni of Balochistan. India has a historical connection with Baloch. हमारी हेमलता माता का मंदिर है बलूचिस्तान में. पख्तूनों से, पठानों से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है. खान अब्दुल गफ्फार खान is a Bharat Ratna in India. Hardly some people associate with him in Pakistan. Bhagat Singh is an idol for every Indian child. आज महात्मा गांधी के उतने फैन नहीं है जितने बच्चे भगत सिंह को देख के सलूट करते हैं. ठीक है.
भगत सिंह का बर्थ प्लेस पाकिस्तान में है, उससे भी कम लोग उनको नीलेश पाकिस्तान में नीलेश एसोसिएट नीलेश करते हैं। इससे सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट मैं अपने यस श्योर। दर्शकों को बता दूं कि द इंडिया वे किताब रिलीज हुई थी 2017 में, 2020 में इसका रीप्रिंट आया था, और अभी जो किताब आई है उसका नाम है दैट वाई भारत मैटर्स। सो एक तरह से राइट। ये कहा जा सकता है दैट दैट वाज पार्ट वन एंड दिस इज पार्ट टू। एक और चीज जो कि देखने में आई है, द इंडिया वे में जयशंकर जी ने कृष्णा's चॉइस, he related a lot of things, he with Mahabharata, but in why Bharat matters me, he has taken a lot of examples from Ramayana. Now, while having a discussion, a heart-to-heart discussion, a heart-to-heart tete-a-tete with Smrita Prakash, with ANI, of course, he says that during one meet, somebody asked him that why are all your examples from Mahabharata? Why not Ramayana? So that is the reason why he chose Ramayana. Now, coming back to you, Nilesh, you are very beautifully connecting the dots. आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बलोच ला रहे हैं, आप पठानों की लीनियज ला रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक अखंड भारत का सपना जो कि एक हर हिंदुस्तानी देखता है उसको ला रहे हैं, बट वाई सडनली देयर इज अ वेव ऑफ going back to the roots, going back to from where we have started? Over to you, Nilesh. Yeah, Bhumi, let's, you know what, how the social media is influencing. I'll tell you a funny story. I was talking the other day with my dad, and I said, Papa, जब ये पाकिस्तान में रोटी के पीछे, आटा के पीछे लाइन दिखाते हैं, तो हम जो आवाम है, वो बोलती है, हंसती है, वो एंजॉय करती है। और जैसे ही नेपाल में आटा के पीछे लाइन होता है, हम यहाँ से भागने लगते हैं कि नेपाल को हमको सपोर्ट करना है। The common people, the common suffering from both the country changes because of the narrative of media, right? भूख तो भूख है, वो चाहे अफगानिस्तान में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो नेपाल में हो, वो पैलेस्टाइन में हो, भूख भूख है, right? But the narrative that a media, the power of media is so much कि वो भूख को आज कलर दे देता है। We can enjoy the hunger, we can enjoy that पाकिस्तानी एक ट्रक के पीछे भाग रहे, and you know you'll have people laughing at it, right? So That is a मुझे sorry वहां state पे, of affairs that actually. is a sorry जी state of mind. So now what happens, जी that 2% जो elite बैठा है पाकिस्तान में, जो अपने आप को हम्म एसोसिएट नहीं कर सकता इस कनेक्शन के साथ, because there is lot of people working in Pakistan who want to connect back themselves to the society. जी I बिल्कुल, was और अभी coming to हम the जैसे example. जी एग्जैक्टली exactly, जैसे कि अभी आप आई एम श्योर आप थोड़ी देर बाद तारक फतेह साहब का नाम लेते, या आप आरजू काजमी जी का नाम लेते, या आप रिबाहा इमरान का नाम लेते, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। और तारक फतेह के बारे में एक चीज़ कही जाती है जो आज सुबह ही मुझे पता चली, कि वो कहते थे दैट फ्रेंच हु लिव इन अमेरिका, दे से दैट दे हैव फ्रेंच ओरिजिन बट दे आर अमेरिकन। सो व्हाई कांट आई से आई लिव इन पाकिस्तान बट आई हैव एन इंडियन ओरिजिन? एंड सेम चीज़ जो है वो बहुत ही उम्दा शो है वहाँ का, लूज टॉक। वहाँ के जो एंकर हैं वो कहते हैं कि भाई मेरा तो पूरा बचपना इंडिया में गुजरा है, मैं तो बस पार्टीशन के टाइम पे हमारे अम्मा अब्बा ने कहा चलो तो हम बोरिया बिस्तर उठा के चल दिया, वरना हमारा कहाँ दिल लगता है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेसिक जो तालीम है वो एएमयू में हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई है। सो Bhumi, just जी जी let जी me cut you. Just let me cut you. प्लीज। Uh, Piyush Mishra Saab hai, he's one of my favorite person that I read a lot, you know, I connect a lot to him. उनका एक poem है हुस्ना, and it's a creation of a partition person, and he हम्म has figured out the address of Husna and everything. उसमें एक कुछ जो पंक्तियां हैं that relate so much. क्या पाकिस्तान में अलग सूर्य उगता है, इंडिया में अलग सूरज होता है? नहीं ना। I mean, these 2% elite sitting at the top, जो own करते हैं country को, who are actual the reason, actually, what is, अगर वो 2% का उनका और and उनका जो narrative है, उसको आप जब तक नहीं हटाओगे, we cannot have that connection. I mean, Bhumi,
वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास आज भी गजवा हिंद का ख्वाब है. Till then, you will not have a Bharat, a zone that is war free. If you want to grow into the superpower, you can't have snakes in your backyard. You A cannot very have a important POK. point, Nilesh. I'd like to add on to your point. आज जयशंकर जी ने यही बोला है that उनसे एक सवाल पूछा गया that you have mentioned China in your book, in the book, as to why Bharat matters, but you have never mentioned Pakistan. So he says because there has been no That's why forward I was movement. mentioning Baloch. I was talking about Exactly. Sindhis. I was talking about Pakhtun. I was talking about Punjab. I was not talking about Pakistan because it's Exactly. not mentioned in the book. Exactly. And but why? As a very as an analyst who has been following. Okay, viewers, I'm very sorry, but there has been some interruption. Okay, Nilesh is back with this. जी Nilesh, मैं ये कह रही थी that as an analyst, why do you think that he did not mention Pakistan? And he says it plain and loud that after the attack, the Pulwama attack, there has been no forward movement from their end. So over to you, Nilesh. How do you see it, and why do you think that he has totally skipped mentioning Pakistan in his book? Bhumi, I'll refer Tarak Fateh sir over here, my Okay. favorite. I so feel often यार कि पाकिस्तानियों के पास ना बहुत टैलेंट है. बस वो अपने टैलेंटेड लोगों से नहीं नहीं इससे मैंने कनेक्ट नहीं करना. मैं इंस्पायर होता हूँ भगत सिंह से. मैं इंस्पायर होता हूँ तारक फतेह सर से. मैं इंस्पायर होता हूँ. मैं ये आज यूट्यूब चैनल पे हम बैठे हैं. द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस यूट्यूब चैनल इज फॉर आवर सैयद हारिस भाई एंड फकर यूसुफ सर. मैं उनको देख के मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ. ठीक है, मैं तारक फतेह सर की तरह बनना चाहता हूँ. मेरी कवालियां यहाँ से आती हैं, नुसरत फतेह अली खान के यहाँ से आती हैं. ठीक है. मेरे गुरु नानक जी वहां से आते हैं. ठीक है. मेरा जो सारा रिलेशन है, मेरा एक कनेक्शन है, वो उनके साथ है. सो आई इट्स पिटी फॉर मी कि मैं उन जिन लोगों को के साथ मेरा कनेक्शन है उन पे मैं हंस रहा हूं. क्यों? वो 2% जो लोग बिलीव करते हैं ना एक नरेटिव में, वो क्रिएट कर रहे हैं इस चीज को. नीलेश, आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रडिक्ट दिस पॉइंट बाय सेइंग कि 2% नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस नैरेटिव में बिलीव नहीं करते हैं. लाइक इट इजंट अबाउट 2%, it isn't about 3%. It is about the fact that there is a huge if there are lovers there are haters, and ये बात बहुत See, फैक्ट है. the hate comes from. See, Bhumi, what is the reason behind the hate? What is the reason behind the hate? And let me connect. I was connecting to the leaders like Bhagat Singh. आपको इंडिया में भगत सिंह के सारी जगह पे लोग मिल जाएंगे, फैंस मिल जाएंगे. पाकिस्तान में टेल मी, give me a list of 50 because fans. they haven't been taught the history. Right, Okay, fine. I right. will Mm, एक बहुत ही No, no, no. Wait. important एक किस्सा है जो कि मैं Yeah, कहना चाहूंगी. Let me complete. So there sure. was an incident where one of my very close relative was traveling, and he's from India, and he met somebody who was traveling from Pakistan, and he was reading Urdu. Now that person who was traveling from Pakistan, he was a non-Muslim. He was a minority there, and he could read and write Urdu. So my relative asked that, how do you know how to read and write Urdu? He says that we have been taught there. हमारे यहाँ इस्लामियात की पढ़ाई करी जाती है. बट वही चीज अगर मैं हिंदुस्तान में कंपेयर करूं, भारत में कंपेयर करूं, that none of the, like, I haven't been taught about religion in my school. I have done my studies from a Christian diocese school, but I haven't been taught about religion. But there, they will not teach about the history. They will not teach about Mahatma Gandhi. They will not teach about Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose. But they will teach about the fact that how Pakistan was made. There, the Qaid-e-Azam is Mr. Muhammad Ali Jinnah, and he is the father of Pakistan. Bhumi, that Kas- happens with India also. Let me come here. Why हमने ये shows start किए हैं? Why we bring our veterans? Why I want to take down the notes of every single veteran who is alive today.
take their statements on record for us. Mm, Because Bhumi, as you said, we belong to the WhatsApp university. हमारे exactly. स्कूलों में तो हमें मुगलों से ऊपर पढ़ाया नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया कि when I want to know about, let's say today I want to know about सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो 3 थियरीज है, as an Indian youth, I demand to know the truth. They say नहीं, उससे impact हो जाएगा, maybe you might have global relations affected. So be it. As an youth, as a young Indian, I deserve to know the truth, even so whatever, how bitter it is. उनके जो फर्स्ट थियरी है, that is that he crashed in a plane crashed and he died there. Okay, उसके बाद अगर वो थियरी सही थी, why you needed the Khosla commission? Why did you need the Mukherjee commission? The second theory comes that no, he survived. That there was never a plane crash, and he moved to Manchuria, and where he was captured by Stalin and killed in a prison. ठीक है, okay. If he was killed in a prison, so be it. क्या होगा, इंडिया और रशिया के रिलेशंस परफेक्ट आएगा? One crazy man, Stalin, was there. We all know. He killed him. But Russia has been a all-weather friend for India. We know that. So Indians will, over a period of time, they'll have to convey us and maybe convince us. We'll take it up. Yeah, the third theory is that no, he was all the way alive and he came to the Ayodhya as Gumnami Baba, and Anuj Dhar sir has written a wonderful book on that. So why not we are answered? It's 75 years. We deserve to know the answer. नीलेश, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी इस बात को हम अगले शो में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम अपने पैनलिस्ट के सामने जिन्होंने वो दौर देखा है। अगेन व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी दैट थ्रू युवा वर्चस्व वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूथ विद द वेटरन्स ऑफ यस्टरडे, जिन्होंने दुनिया को देखा है, दुनिया को बनते हुए देखा है, भारत को बनते हुए देखा है। एंड टुडे वी वर गिवन एवरीथिंग ऑन द प्लेटर। वी हैव हैड आवर स्ट्रगल्स, बट द मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट अवेयर अबाउट द हिस्ट्री। वी जस्ट हैव वन लाइनर्स। बहुत ही दुख की बात है, और हम में से कई तो ऐसे हैं जो किताबें भी नहीं पढ़ते हैं। तो वी आर कनेक्टिंग दोज हु यूज्ड टू स्टडी एनसाइक्लोपीडिया, who used to study Britannica and used to do research in the libraries. जी नीलेश, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज Yeah. बोलिए। भूमि, I'll say that हमारा आज का जो ग्रास्पिंग पावर है ना, वो रील से हम रील से अपने आप को कनेक्ट करते 15 हैं, सेकेंड, इट इज ओनली 15 राइट? सेकेंड। हमारा अटेंशन हम स्पैन इज अपने आप 15 के सेकेंड, 15 सेकेंड या। आज तारक फतेह सर का की जो बुक है, आई एम सर्चिंग, अगर हमारे कोई किसी व्यूअर के पास हो, उनका अगर ऑटोग्राफ बुक हो, तो आई एम सर्चिंग एज माय कलेक्शन। तो अगर किसी के पास तारक फतेह सर का ऑटोग्राफ किया हुआ बुक हो, तो आई एम रियली सर्चिंग फॉर दैट, दैट वुड बी वंडरफुल थिंग। एंड कमिंग डाउन टू नेक्स्ट, या भूमि, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट खान अब्दुल गफ्फार खान. He is a hero today. We celebrate Khan Abdul Ghaffar Khan. Not many people would know. In Pakistan, let's give them a bit of information. वो भारत रत्न है, हमने उन्हें भारत रत्न दिया है, द फ्रंटियर ठीक है? गांधी। फ्रॉम देयर टू द मॉडर्न एज, तारक फतेह सर, आज इंडिया में तारक फतेह सर को सेलिब्रेट किया जाता है। कम डाउन, एंड आज आरजू मैम घर घर में बसी हुई हैं इंडिया में। फकर यूसुफ सर, कौन नहीं जानता है उनको? सैयद हारिस साहब मैं मॉडर्न यहाँ पे जर्नलिज्म के ऐड लिए करना एग्जाम्पल है। चाहूंगी अ वेरी, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट आई लाइक टू ऐड अप द नेम ऑफ द वेरी फेमस ह्यूमरिस्ट मिस्टर मोइन अख्तर, मिस्टर अनवर यस, मसूद। अनवर मसूद अभी भी जिंदा है, और अनवर मसूद सर का एक मैं पॉडकास्ट देख रही थी जिनमें उनसे पूछा गया कि आपके ये जो शो है लूज टॉक, वो आज भी चलता है, आज भी उस पर इतने व्यूज आते हैं। वो कहते हैं मैं क्या करूँ, रोज मुझे एक ना एक इंसान कॉल करके कहता है ये आपने अभी कल बनाया है,
तो वो कहते हैं नहीं जनाब, ये तो मैंने बहुत पहले बनाया था, मोइन तो अब जिंदा भी नहीं है। कहते हैं हालात तो वैसे ही हैं पाकिस्तान के। तो अनवर साहब कहते हैं दैट पिछले 70 सालों में हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा इतना तरक्की कर दिया, लाइक द इंडिया हैव प्रोग्रेस्ड itself, but then again, but पाकिस्तान फेल टू डू सो बिकॉज वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान को एलीट क्लास ने तोड़ डाला, and it is a very sorry state of affairs. Now I'll come back to Jaishankar. Let me come back to Jaishankar, where again I'll say that in his book, while having a discussion about his book, he says it very loud and clear that आज जो आप इंडिया को as a global पार देख रहे हैं, that is only because of Mr. Narendra Modi, because of the foreign visit. Foreign policies have changed. The course of the foreign Exactly. policies have altered completely just because Prime Minister Modi went to Dubai. How many prime ministers since the formation of India had went to Dubai despite knowing the fact that many Indians reside there, right? How many of us tried to build a good relationship with Israel, or for that example with America, or for that Uh, example with China? So yeah, Nilesh, I'll come back to you. जहाँ पे आप please continue what you were saying. Yeah, Bhumi, I'm sorry. I was saying I'll just give you the live example of this thing. I was in Qatar when the Iraq and Exactly. US war started, you Hmm. know, and that time India did not have this diplomatic power. No, we Papa did not. told me once that, if the things turn worst, and if there happens something, where we have to head is not to the Indian embassy, but ICC center. That time we did not trust the embassy, rather we trusted the association, or the ICC was the Indian Cultural Center, where actually the big Indian names came together. So Papa told that, okay, if something happens, turns south, we will go to that place, we will meet at that place, not heading to the embassy. That clearly showed that that time my dad did not trust the embassy that much, rather the community, इंडियन कम्युनिटी एट लार्ज, कि हम अपने Exactly. को छोड़ के नहीं छोड़ेंगे नहीं. Okay, and Exactly. let me Hmm. bring you back to the, I was in Qatar during the COVID situation. Okay, Okay. and and when I heard Leish yalla rob and the bit, Hmm. I was told, I resided in Qatar for all my life, and when this COVID happened, I was Hmm. told yalla re and the bit, चलो अपने घर जाओ. Hmm. Hmm. ठीक है. So Hmm. मेरी माँ, when that Nawami, that Vande Bharat Express started, and the Hmm. first ray of hope that I'll go back to my land, you know, Hmm. that that has changed a lot. पहले हम Okay. सोचते थे हम यहाँ से ब्रिटेन भाग जाएंगे, हम यहाँ से कनाडा भाग जाएंगे, अब हम It इंडिया में is आना घर चाहते हैं. वापसी. Is it a ghar vapsi wala situation for everybody, that Yes, everybody is yes, coming home? yes. It is homecoming for everybody, and everybody is trying to come back from where they started. They are coming back home. It is And it's very nostalgia. important. Last, let me just make my last remark for today. It's very important for us to fight for those 98% there also. Dear, because those 2%, they are very happy. They are enjoying, blah, 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 blah. I accept it. But just imagine the pain they are going through. The 98% people, they are going through a pain, and it's, if we want to be a superpower, we have to raise our Nilesh, voice for I that would Baloch, for I would that like to stop you Pathan. there. I would like to stop you there and ask you one more question before we wind up for today. That do you think that as an analyst, as an NRI, as somebody who has come back to India, that the borders, we are seeing that Ukraine and Russia border is getting, it is diminishing. We are watching, but we are also providing help. We are watching Israel and Hamas war. The borders are diminishing.
Is there a chance Taiwan and China, the borders are diminishing? Do you think for that 98% people that you just mentioned, the borders can diminish? That India, the next I'll finish security it with one. provider, I'll just finish it can in provide? one sentence. I'll just finish it in one sentence. अगर पीओके, पठान्स, खैबर पख्तूनख्वा, बलोच, सिंधी, नॉन मुस्लिम्स और पंजाब आज़ादी मांगेगी तो गोलियों से दिया जाएगा. क्या करें? अक्सर Okay. अमेरिकन द सैम चाचा delivers the democracy with bombs. That's my Okay, line. so that comes, viewers, हमारे पास वक्त कम है, and since we are winding up, I would ask you a question. What do you think should be done? Do you think that Pakistan and India, rather the other way around, that India should intervene and should save the Baloch women, the Baloch men, the Baloch kids? Should we jump in to save the Sindhi people? Should we jump in to save the Hindu minority there who are facing n number of atrocities? Should we do something? And what do you think about the Or should borders we being allow, removed? or wait, Bhumi, let me just Nilesh. point it with, connect it with our CA. Or should we ask our government to allow all the people from Pakistan to come in But India, that is a very wrong irrespective way of to put it. religion? That is a very You know, wrong way to put it. That is why CAA and NRC is coming into being, because we are trying to make the citizens of India should be recognized as citizens of India. We have a number of refugees who neither belong there, neither belong here. They have no home. We will come to that topic. We will be taking up that topic at Yuva Varchasva. We will be talking about each and every issue that bothers the young mind. Till that, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज, जय हिंद. Jai Hind.